Yeah. हाँ. So I'll speak on it. आप एक बार बात करिए, check करिए. बस ठीक है, done मैम, done. Let's start. A very good morning to all of you and namaste. I am Tapsi from the corporate office, Saint Anandram Jaipuria Group Corporate Office team. Today, I welcome you all to this webinar, which is the need of the time, and the internet has entered every nook and corner of our lives. We pay our bills, we chat, shop, we peep into the life of others through the Facebook and Instagram. Our children play online games and whatnot. But have you ever thought, how cyber safe are we? How safe are our children when they browse the social media sites? How can we protect ourselves and our children? What does the cyber laws look like? So we thought that we should help our parents, teachers, and students in this matter. We invited Rachit Lamba, the expert in the domain of cybersecurity, to make you aware on all the pitfalls of the cyberspace. Before I begin, let me tell you the house rules of this session. I hope you all have a pen and paper ready to jot down the points you feel will be useful to you. If you have a question, kindly type it in the chat box. We will take it up once the session is over. Now, a little about our resource person. Rachit Lamba, who is currently based in Chandigarh, has spent around 11 years in the edtech industry, where he has expressed his skills towards delivering trainings on technology-based education. He is a Google for Education certified trainer for Google App and Microsoft certified innovator for Microsoft Tools. He has delivered trainings and workshops in more than 300 schools and colleges across northern India. He has been taking sessions for Google Apps and Gadgets in association with Google, artificial intelligence, cybersecurity, and implementation of teaching aids for online classes and assessment in schools and colleges. Rachit ji, a very, very warm welcome to you from all of us. We are super excited to have you with us. So I won't waste much time and the platform is all yours, sir. Rachit ji, you can share your screen. Yeah, sure, ma'am. So, first of all, a very, very good morning to all. So, first of all, Tapsi ma'am, I would like to thank you for the warm welcome. And we believe we'll learn together so many things new today. So, as we are talking about the topic cyber security today, so we'll just start with the basics, and then we'll come up to some incidents which has recently happened on cyber security issues, cyber attacks recently happened, and so many more things. So I heartily welcome you all to this webinar on cyber security. So this is Rachit Lamba, Google certified trainer and Microsoft certified innovator. So we are shortly sharing with you the compendium of overall session today. So this is what is cyber security. We'll be discussing then impact of cyber crimes across the globe, and then we'll come upon a report on cyber crime across the globe, and then impact of cyber crimes in India. Then types of threats and how we can protect ourselves from those threats, and cyber laws, and then we will share some videos wherein you can see the recent cyber attacks case studies happened in last few months, and we can say the couple of months and last year also. So here we are beginning the session. So what is cyber security? Basically, cyber security is the practice. We can only practice and protect ourselves from these threats. So cybersecurity is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks, viruses,
and so many other threats which are coming to hack computer systems or stealing passwords to phishing and everything. So just to aware you all, this overall report will aware you of the world, how much cyber crime is going on all over the world, and what is the percentage all through. So we have all across 20 countries, top 20 countries which are there into the cyber crime, and most of the cyber crime is happening in United States of America, USA 23%, then second is China, and third is Germany. And this is a recent survey, a recent report issued by Bloomberg. So India stands rank 11 in cybercrime across the globe, and that constitutes 3% of the global cybercrime. So major cyber crimes reported in India. What is the scenario? How come India is facing this? And we are standing at 11th number in the globe, and we are facing these issues like phishing, then cyber squatting, cyber stalking, then denial of service attack, and defacement of websites. So we will slowly and gradually move towards all these topics, and we'll learn that how we can protect ourselves from these kind of cyber threats, and overall, how we can find out the best solutions which we have as a protection. So one by one, let us. Okay, so a message to all that who are raising hands. So we have kept a Q&A session after this webinar. So please put your queries in the chat box, or otherwise you can ask it later on. So all of you who are putting raising hands, so please uh, keep your queries in the chat box. So first of all, we are having phishing, and then we have cyber threat is malvertising, then we have Trojan horse, then we have ransomware to discuss. These are the overall these threats. Through these threats where the hackers are trying to steal the information or steal the passwords or hack the computer or delete data and so many other things. So then we are having botnet and denial of service attack. So let us first discuss phishing. So phishing is a scam, are typically fraudulent emails or websites appearing as legitimate enterprises, right? They will appear to be original, authentic, but they are not authentic actually. And source is through the university name, internet service provider name, or bank. They are doing such things. So that is happening. And then we are having, see, these scams attempt to gather personal, financial, and sensitive information throughout, and to steal your money in your accounts or steal the information. So these kind of hacks are happening. Then we are having so just to aware you about the phishing, that how phishing happens, I have just taken a template of this overall information. So this will explain you how some mails are coming to your inbox sometimes, and then you just reply to them or just revert with your personal IDs. You think of that it is coming from the bank, coming from the university, you are appearing in, coming from your service providers. But sometimes they come up with these kind of tricks that they will send you similar mail as it looks as an original sender. So how we can detect that, how we can overall authenticate that it is a right sender or not. So these are the basics. So use of a trusted company logo. So first of all, match the company logo that is mentioned in the mail is right or not. You can check it on Google that what is the right logo of that company which is sending you this mail, or bank or institution. Then you have to see that dear Visa customer. So this is a generic salutation, right? Generic salutation means to say they will keep you. This is the way they are sending, but they will send you in your personal name, right? So this is and they will be sending you this unprofessional manner mail, this your account as soon as possible. So these highlighted words into the line, you can see underlined highlighted words is to inform you the recent update. We require that confirm your account as soon as possible. So bank or other any other institution will not write as soon as possible in the formal mail. So please notice that. And then notice the domain from which the mail is coming, or not, like Visa,
and hyphen then secure.com, then there must be awareness of these things, that the original sender domain is what, and what domain we are receiving the mail. Then the statement urging for immediate action. No other institution or a service provider attached with you will ask for the urgent services, and they just send you this mail with the immediate action and all. So you don't have to reply that. Some kind of people come up with the job offers also to seal your information and everything. So these things you have to authenticate to protect yourself from phishing. Then sharing with you the latest hacks that are happened. So Economic Times has informed that State Bank of India data, customer data has been stolen, and then they have been sending messages to customers about the balances, about the IDs and all those things. And the fake messages people are receiving throughout the authentic sender, they are making the addressing the names also, and so many people suffered and received the message also. SBI app closed due to that once, right? So it happened in November 2022 only. Right, then the biggest hack that has happened, we will be discussing today. I will put a video also on it. So that is Economic Times news. So in Economic Times news, it was there that Uber got hacked and admits to computer system breach, was customer data compromised. So the huge data of customers is compromised. Then Uber paid hackers to delete stolen data on 59 million people. Then the company paid the hacker $1 lakh to delete info and keep quiet. So Chief Security Officer Joe Civilian and another ex ousted. So many people, try to hack the informations, and Uber paid hackers to delete the stolen data on 57 million people. So that is one more cyber attack. Then firewall times. Then Amazon data breach happened last year. So it was happened last year in October 6, 2021. And in June 2022, a former employee of Amazon was convicted for the role into this overall scam. Rachit ji, you are on mute. Yeah, Can sorry. So anti-phishing moves. आप phishing से कैसे बच सकते हैं? Browser capabilities. You have to check your browser capabilities. You have to see that I will share some techniques with you how you can protect your browser. Then virtual private network. VPN is a kind of portal which provides you the services for virtual private network where you are doing safe surfing. Then you can how you can save yourself from this phishing. आप ईमेल में ब्लॉक्स एंड फिल्टर्स लगा सकते हैं अपने. Is it any email, Yahoo, Gmail? I will tell you the ways. मैं techniques आपके साथ share करूंगा. Then domain monitoring. You have to monitor the domain from which the mails are coming, and the people who are sending you messages are right or not. And double layer password protection. This also I will explain कि आप कैसे double layer password protection लगा सकते हैं. Two factor authentication लगा सकते हैं जिससे आपके पासवर्ड हैक होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं. Right. So is it going good? Am I clearly audible, Tapsi ma'am? absolutely, Rachit ji, it's going fine. We are good. All right. All right. So some more tips for saving yourself from this phishing. So I will share with you is browser capabilities for anti-phishing. So disable pop-ups, prevent the storage of non-secure cookies, ensure that downloads are checked by antivirus software, right? And then use virtual private network. देन डेस्कटॉप एजेंट्स. आप डेस्कटॉप पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जिससे आप फिशिंग से बच सकते हैं? पहला तो आप यू हैव टू अपडेट योर एंटीवायरस. यू हैव टू टेक अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ एंटीवायरस. सम पीपल ट्राई टू डू इट. वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं एंटीवायरस और फिर वो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं. वी आर प्रोटेक्टेड दे फील, बट इट इज नॉट.
you have to take a paid subscription which is costing you around 1000 rupees, which gives you an overall protection of 1 year. So that must be there, and paid antivirus software we must use from a good company. So many companies are providing that. Then some of them is HP, Sony. They are providing these antivirus softwares, authentic ones. Then personal IDS, you can take personal IDS also. So IDS, I will explain what it is actually. So firewall, and you can also use toolbars like Google Authentic toolbars for your internet usage. Internet usage के लिए हमेशा authentic browser ही use करें, right? And then incognito mode is also a good option to use safe net surfing. So I will come upon this thing. I will explain you how you can protect yourself into that. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ब्लॉक्स एंड फिल्टर्स में. आप अपनी मेल को कैसे सेव कर सकते हो और आप ब्लॉक्स लगा सकते हो फेक सेंडर्स पे. सो हाउ यू कैन पुट दैट कि आपके पास ऐसी मेल्स आए ही ना जो लोग लुक्रेटिव ऑफर्स भेजते हैं, या फिर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे वांट टू टेक फ्रॉम यू. ऐसा कुछ भेजते हैं कि जिससे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है. सो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू कम इनटू योर जीमेल and then you have to come into settings. Here settings option is there. Then you have to come into the filter and block addresses, and then you have to create a new filter, right? Next step is you have to create a filter and then come into this, and then you have to write the name here from which sender you want to block the mails, right? So I have written here prize or lottery mails. I don't want on my desktop, on my mail. सो अब मेरी मेल पे वो प्राइज एंड लॉटरी की मेल्स ना आए तो मैंने वो टाइप कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन, ये वाली मेल्स ना आए वो भी टाइप कर दिया. देन लोट यहाँ पे मार्क कर दिया. सो देन आई हैव टू क्रिएट फिल्टर. सो यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा फिल्टर को. देन वी हैव टू गो एंड डिलीट इट. सो यहाँ पे आपको मार्क करना है डिलीट हो जाए सारी मेल्स जो आपके इनबॉक्स में आ रही हैं, जो कि ऐसे सेंटर्स भेज रहे हैं प्राइज लॉटरी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन. सो यू विल बी सक्सेसफुली डूइंग इट. डिलीट इट एंड देन डन. सो आपके पास ये सब मेल्स आनी बंद हो जाएंगी. और आप फिशिंग से कैसे बच सकते हैं, डोमेन मॉनिटरिंग करके. डोमेन मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप, www.fishtank.com and Fish Labs. These are the two portals which are providing services for domain monitoring, authenticating the domain. कि जिस डोमेन से आपके पास मेल आई, जिस वेबसाइट से आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, सो वो सब लिंक्स एंड ऑल वो ऑथेंटिक है या नहीं, ऑथेंटिक सेंटर है या नहीं. सो वो सब जो है ये कंपनी जो है ऑथेंटिकेट करती हैं दोनों, फिश टैंक एंड फिश लैब्स. सो यू कैन गो ऑन देयर पोर्टल और आप चेक भी कर सकते हैं पुटिंग एनी लिंक वो ऑथेंटिक है नहीं, इट विल टेल यू द रिपोर्ट. देन स्टे अलर्ट, डू नॉट फीड द फिश. So malvertising. So second is second threat of to the cyber things is this malvertising. Malvertising is malware ads and malvertisements when displayed attempt to install spyware, adware, otherwise hijacks यूजर ब्राउजिंग सेशन. जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो आप देखते हैं कई बार पॉपअप्स आते हैं साइड में, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, दिस इज फेसबुक इज प्रोवाइडिंग दिस, गूगल इज प्रोवाइडिंग दिस, ऐसा आता है ना. So some kind of ads are fake also. Facebook, Google, Infosys, Wipro के नाम पे फेक लिंक क्रिएट कर देते हैं. जो लिंक आप जब क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, और वो सॉफ्टवेयर आपके हिडन आपके पीसी में पड़ा रहता है, which is having some kind of trojan or viruses or some kind of doing the stealing information from your PC and otherwise harming your PC with viruses. So आप be aware कि जब भी आप नेट सर्फिंग करें, don't click such links which are coming as an ad pop-ups, right? So often ads are built up upon legitimate ads from legitimate vendors. So then in other cases entirely fake marketing campaigns come with complete functional sites. So fake marketing campaigns bhi hote hain that the Amazon is providing 90% discount, Flipkart has issued 100% discount on such products. So ऐसी ads आती हैं जब आप सर्व करते हैं कई बार, so वो pop-ups होती हैं और उसके थ्रू लोग फंस जाते हैं, right? So you have to be aware of that. And affecting publishers from the long tail to the top, Yahoo, MSN, all have been taken up for these kind of putting these kind of cyber threats by them, hackers. So malvertisement का मॉडल, वो malvertisement होती कैसे है? This is a user जो है वो वेबसाइट को ब्राउज करता है एंड देन malicious बैनर्स और वो सब कुछ देखता है जो एड्स एंड पॉपअप्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में. और फिर क्या होता है, वो जब वो क्लिक करता है malicious बैनर को तो वो ड्राइव बाय डाउनलोड
nodes में कब आ गया आपको पता ही नहीं चलेगा. It is hidden sometimes, right? And then attacker steals the information from the PC. So how this works, how malvertising works? User trusted website, redirect, and then drive-by download, and the malicious banner shared, and attack happened by the hacker. So this is there, and techniques to protect from malvertisement. Malvertisement से कैसे बच सकते हैं आप? So first of all, awareness होना बहुत जरूरी है, जैसे कि अभी हमने share किया about all these things. We don't have to click such ads which can harm our PC, right? Judgment of source is reliable or not. Sometimes some ads are authentic also, yes, but sometimes the ads can be harmful also. You have to judge the source, that the logo of the company which is mentioned in the app, this advertisement is correct or not, everything going good or not. And then protect your browser first of all. So you have to protect your browser out of that. And to protect your browser, there are two portals you can note down. So www.fixyourbrowser.com and mediatrust.com. So these two companies, two websites are providing services to protect your browser. So they provide such kind of software solution which is imbibed into your as an extension to your browser. Extension डाल देते हैं वो, जिससे कि आपका browser protected रहे harmful ads से. Then techniques to protect from malvertisement, as I have said, fix your browser. So ये fix your browser की site है. So remove adware from window 10. Removal instructions are updated. So this is a one software solution provided to remove adware from window 10. ये window 10 से adware remove करने के लिए एक software दिया हुआ है. Then malvertisement से protect करने के लिए mediatrust.com, ये भी आप play करके देख सकते हैं. You can log in into it and you can request for a demo. आप paid services भी ले सकते हैं इसकी to protect your browser. Then comes up the Trojan horse, right? So Trojan horse is having a story which I will share with you via video. So it is an interesting story why its name is kept Trojan horse, right? So we will be sharing that. So it looks like a normal application या आपके overall एक file folder की तरह लगता है, right? And then it carries the virus inside it and pass the antivirus. जब आपका antivirus expire हो गया, आपको पता नहीं चला, तो ये attack कर देगा उसको, right? So these kind of things it is doing. And let us first watch the video to understand Trojan horse. So here I am going to play the video. Okay, just wait a minute. So here I'm sharing. So Tapsi ma'am, video is visible? It is, but it's not playing. You have to play. Yeah, I'm just playing it is visible. A Trojan horse, also known as Trojan, is a type of malware designed to provide unauthorized remote access to a user's computer. The term gets its name from the Greek story of the Trojan War. According to Greek mythology, Greeks offered the Trojans a peace offering in the form of a large wooden horse. However, when the Trojans wheeled the horse behind their closed gates, there were soldiers hidden inside the horse and they climbed out and opened the city gates, allowing the Greek army to capture the city. Trojan horse software also operates the same way, where city can be imagined as your computer and the horse is often a malicious computer program appearing to be useful. Trojans do not replicate by infecting other files on computers like viruses. Instead, they often survive going unnoticed. They may sit quietly in your computer collecting information or setting up holes in your security. Trojan horse can steal various data such as credit card information and can also install more malware into your system. Some of the most common things Trojans can do are creating backdoor, which makes changes to your security system so that your data and device can be accessed by their controller. Spying,
Some Trojans are designed to wait until you access your online accounts and then send your data back to whoever is in control. Zombie computing. Some Trojans just want to use your computer as a slave in a network controlled by a single hacker. Trojans can also infect smartphones, and the most common way for criminals to make money is by using them to make your phone send costly SMS messages to premium numbers. So what does a Trojan look like? Well, Trojans can look like just about anything. The computer game you downloaded from a strange website, the free MP3 song by your favorite singer, or just anything you downloaded from an unauthorized source. So it is better to install a good antivirus program, not to mention with a legit license. Stay away from questionable sites. Do not download pirated materials. That could be a reason why software and programs worth of hundreds of dollars are offered to you for free. And never click on dubious links. Hope you like this video. Share. Okay, so I believe all of you have got a fair idea about Trojan horse. So as the story shared, there used to be horses in the armies in ancient times, where used to be the army personals used to sit inside the horse and used to attack when the soldiers are going to attack in a hidden way inside the horse. So similar way this Trojan horse works. Trojan horse भी ऐसा ही करता है. Trojan horse क्या करता है? Slides visible? Yes, absolutely. ओके डन. सो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? इसी तरह से एक फाइल फोल्डर के थ्रू आपके कंप्यूटर में आके बैठ जाएगा, and then it keep on stealing the information, and also it can damage your computer, right? So remote access trojans, the most common. Remote access means to say एक सॉफ्टवेयर है जो किसी रिमोट से हैंडल हो रहा है आपके कंप्यूटर में, and then password sending trojans, that they are sending such kind of steal all cache passwords. जो भी कैशे में आपके पासवर्ड सेव हो जाते हैं, सेव पासवर्ड करते हैं हम ना, मतलब अनेबल, हम कई बार अपनी पासवर्ड इंफॉर्मेशन सेव कर देते हैं ताकि पासवर्ड बार बार एंटर ना करना पड़े. तो वो जब हम कर देते हैं तो वो सारे के सारे पासवर्ड्स कैशे में से स्टील कर लेता है. देन की लॉगर्स लॉग द की स्ट्रोक्स एंड ऑफ द विक्टिम. देन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रॉय एंड डिलीट फाइल्स, और आपका ओवरऑल सिस्टम डैमेज कर देते हैं. देन उसके बाद टेक्निक्स कि आप ट्रोजन हॉर्स वायरसेस से और स्टीलिंग इंफॉर्मेशन हैकर से कैसे बच सकते हो. सो वायरस एंड देन वायरस चेकर, फायरवॉल. You have to have a firewall in your system, protected by a firewall, and then antivirus also. Then spyware remover भी आप use कर सकते हैं. Some kind of softwares are available online, but you have to see the authentic service provider. राइट. उसके बाद आप फ्रीक्वेंट ओएस अपडेट्स कर सकते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते रहिए. जैसे कि आजकल विंडो 10 विंडो 11 में वीकली अपडेट्स आते हैं. जब भी उनको लगता है कि सिस्टम अपडेट करने की जरूरत है, दे सेंड यू एन अपडेट. तो हम कई बार अपडेट नहीं करते हैं, महीनों तक अपडेट नहीं करते हैं, इसके कारण वायरस आ जाता है एंड इंफॉर्मेशन भी स्टील होती है थ्रू ट्रोजन हॉर्स. देन फ्रीक्वेंट बैकअप्स. आपको अपने डेटा के बैकअप्स भी रखने चाहिए, मेलिंग डेटा बैकअप्स. देन यू हैव टू टेक सर्टेन बैकअप्स. अगर आपका सिस्टम पूरा का पूरा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया या फिर कुछ हुआ ट्रोजन हॉर्स की वजह से, तो आपका बैकअप आपके पास हमेशा रहे, राइट. एंड एड स्पाईवेयर और लॉन्ग टर्म, दीज आर द शॉर्ट टर्म एंड दीज आर लॉन्ग टर्म solutions. And add spyware to antivirus. Antivirus में एक spyware add हो जाता है, so वो भी एक paid subscription है, you can add that. Automatic maintenance पे आप अपडेट पे डाल सकते हो अपने सिस्टम को. Legislation means to say you can take legitimate softwares. Then education on problems. आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है साइबर सेफ्टी के लिए. सबसे बड़ी चीज जो चाहिए साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए, दैट इज अवेयरनेस. यू हैव टू हैव, because only if you have awareness तभी अपने आप को प्रिवेंट कर पाओगे इन चीजों से. देन बायोमेट्रिक एक्सेस पुट कर सकते हैं ताकि कोई भी सिस्टम में फाइल आने से पहले आपके पास आपके फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल required हो. So those kind of things are being done by some companies, IT companies, so that their information cannot be stolen. So whenever the person log in the computer, उसका fingerprint जरूरी होता है to take the data or access the system. Then ransomware भी एक तरह का cyber threat है. It is a big kind of cyber threat. Ransomware is a type of malware that attempts to extort money from the computer by user by infecting and taking control of victims.
राइट। ये क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट और फाइल आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच गई, एंड देन दे ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी, आपको ओवरऑल थ्रेटन करके, आपको धमकी देके कि आपकी डेटा इंफॉर्मेशन स्टील कर लेंगे, कर देंगे, राइट। तो इस तरह से उसको यूज किया जाता है। Then typically ransomware will either lock the computer to prevent or normal usage, or encrypt the document and file onto it and prevent access to save data. कई बार वो कंप्यूटर को लॉक कर देता है, आप अपना सेव डाटा भी नहीं देख सकते। Then how do ransomware works? Ransomware कैसे काम करता है? How do criminal installs ransomware? आपके सिस्टम में ransomware कैसे इंस्टॉल करते हैं? Ransomware generates a pop-up window, web page or email warning from what looks like an official authority, right? एक pop-up window या web page और email warning के through ये enter हो जाता है। Then ransomware is usually installed when you open malicious email attachment। आप कई बार इंस्टॉल कर लेते हैं कि yes this company Wipro की लाई आपको providing this software free of cost, right? But some you have all software और बाद में आपको पता चला कुछ दिनों बाद your data has been stolen और आपका system lock कर दिया है, and they will ask you some money to unlock your system if you have some kind of important documents, confidential documents हैं कुछ, वो आपको चाहिए तो वो वापस लेते हैं। ऐसा ही उबर के साथ हुआ। उबर का इंफॉर्मेशन एक लेप्सस नाम के ग्रुप ने, हैकर्स ग्रुप ने उबर का पूरा सिस्टम हैक कर लिया, 59 मिलियन लोगों की इंफॉर्मेशन स्टील कर ली। फिर उन्होंने एक्सटॉर्ट किया कि आप हमें पैसा दो तो हम देंगे। सो दे आस्क्ड फॉर $1 lakh, $1 lakh million, $1 lakh they took to return that overall data and to compromise with the company, and Uber paid that money to the hacker so that their information is not getting compromised. Actually, it is the mistake of Uber. They threatened once 1 year ago also. They at that time they did not took those kind of steps. उन्होंने preventive steps नहीं लिए, उन्होंने पहले threaten किया 1 साल पहले, but फिर जब उन्होंने कर दिया तो they had to pay the money of extortion. Then ransomware can be installed when you visit malicious websites. So how to prevent from ransomware? Keep all the software on your computer up to date. अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए अपने मोबाइल फोन्स पे और अपने सिस्टम्स पे, बहुत जरूरी है। Make sure automatic updating is turned on to get all the latest security updates, browser related components. Then keep firewall turned on always. Then don't open the spam mails. स्पैम मेल्स को ब्लॉक कैसे करना, फिल्टर कैसे करना, ये मैंने आपको बताया। सो आप कोशिश करिए कि ब्लॉक कर दीजिए जो भी अनयूजुअल से वर्ड्स के साथ विनिंग लॉटरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर्विस प्रोवाइडिंग, ऐसे वर्ड से जो मेल्स आती हैं, सो उनको ब्लॉक कर दीजिए आप। सो दैट एंड आप एक सर्टेन आपको एक सेंटर मेल कर रहा है, बार बार आपको ऑफर्स भेज रहा है, आप इरिटेट हो चुके हैं उस कंपनी से, तो आप उसका भी ईमेल आईडी डाल के उसको ब्लॉक कर सकते हैं। Blocks and addresses filters provide you this feature also. Then IDS, as we were sharing, IDS is also one of the technology जिससे आप अपना सिस्टम सेव कर सकते हैं। काफी कंपनीज इसका यूज करती हैं to save their systems. So what it does, ये सर्वर पीसी के साथ लगता है, एक इंस्ट्रूमेंट और एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है। Then कमर्शियल नेटवर्क सॉल्यूशन है जिससे कि आपके फायरवॉल से पहले एक और प्रोटेक्शन है, IDS, राइट। पहले आपका IDS है, देन फायरवॉल है, देन स्विच है। सो ओवरऑल आपको एन इंटेलिजेंट फायरवॉल प्रोवाइड करता है, मॉनिटर्स एक्सेस फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज। कोई भी स्पाईवेयर है, कोई भी एडवेयर है, वो सब ये रोक देता है, intrusive detection system. And then a neural network trained by backpropagation on usage data. So usage data के ऊपर भी ये काफी analysis provide कर देता है। Then could detect Trojan horse attacks, but not designed for spyware, right? It is designed for Trojan horse attacks also. Then Trojan horse का एक लेआउट मैं आपको दिखा देता हूँ कि Trojan horse कैसे ओवरऑल एक्ट करता है। सो ये एक एग्जांपल है, Amazon की तरफ से ऐसा कोई मेल आता है आपको कई बार जेनरिक नॉन पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग के साथ, ईमेल मैनेजमेंट एट Amazon का भी आपको ऐसी मेल आईडी से आपको नहीं करेगा। Amazon का आप देखिए डोमेन नेम Amazon Canada लिखा हुआ है। So these are kind of things we have to detect while replying to a mail or opening the mail or even we have to see that we are not downloading some things from it. ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है using the internet.
So then also you can see domain name. Domain बड़ा ही unusual सा लग रहा है. Domain name में amazon.com आगे slash जो भी ये लिखा हुआ है, it is not looking as overall authentic. तो वहां से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं. और एक और टिप है जिससे आप सारे वायरसेस और साइबर थ्रेट से बच सकते हैं. आप जब भी नेट सर्फ कर रहे हैं, आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो HTTPS हो. अगर वो HTTPS नहीं है तो आपका चांसेस ज्यादा है कि आप अनऑथेंटिक वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर रहे हैं. यू आर सर्फिंग देयर डेटा. दे कैन स्टील योर इंफॉर्मेशन और दे कैन डू एनीथिंग रॉन्ग इन द साइबर थ्रेट्स. So cyber squatting. अब cyber squatting क्या है? Cyber squatting is an unauthorized registration of internet domain, use of internet domain names that are identical or similar. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी मेल्स में कई बार लिंक्स आते हैं, लोगोस लगे होते हैं, एंड देन ऑल दोज थिंग्स वो मैचिंग मतलब ओवरऑल सिमिलर होते हैं टूवर्ड्स द जेन्युइन. जो ऑथेंटिक है वैसे ही दिखने वाले होते हैं बट ऑथेंटिक नहीं होते हैं. तो उस टर्म को साइबर स्क्वैटिंग कहा जाता है. पर्सनलाइज्ड ईमेल करते हैं विद देयर डोमेन नेम्स, मैचिंग डोमेन नेम्स, सिमिलर डोमेन नेम्स, आइडेंटिकल डोमेन नेम्स के साथ करते हैं. सो दे टेक साइबर स्क्वैटिंग registrants obtain and use the domain name and the bad faith intent to profit from the goodwill of the actual trademark. अब वो एक्चुअल ट्रेडमार्क के लिए तो सब लोग लेने के लिए रेडी हैं. अब उसका ट्रेडमार्क यूज करके इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं या फिर extort करते हैं लोगों. So this is cyber squatting. Then botnets. So now we have come upon botnet. Botnet is also one kind of major threat to the overall cyber world. So that is how it works. It works, and botnet is found to be working into very large capacities. It multiplies files into your systems like a zombie, like a zombie army. So जैसे कि एक zombie, if bites the other zombie, we can see that concept. So similarly, it has named that it works like an army of zombies, right? Carry out the sophisticated attacks to disrupt, gather sensitive data, and increase armies. So ये जब इंस्टॉल हो जाता है, इस तरह का थ्रेट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है या फिर ऐसी कोई बॉटनेट आ जाता है, so it tries to and it keeps multiplying the files. और वो इतने ज्यादा मल्टीप्लाई कर देगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन एंड आपका डेटा जो है करप्ट भी कर सकता है एंड स्टील भी कर सकता है. Then armies are in thousands and to aggregate computer powers and majorly ये जो server connected PCs होते हैं इस पे अटैक करता है. Because one PC to another PC to another PC, it moves very fast, right? So इसका यूज ओवरऑल एन कंप्यूटिंग बेस्ड सिस्टम पे, सर्वर बेस्ड पीसीज पे ज्यादा होता है. जो साइबर अटैक करते हैं वो एन कंप्यूटिंग और ओवरऑल सर्वर बेस्ड पीसीज पे ज्यादा इसका अटैक करते हैं. Communication network allows bots to evolve on a compromised host. So then this is the model of structure of this botnet. Botnet कैसे काम करता है? एक CNC सर्वर है जो उसको ओवरऑल कमांड करता है, कमांड एंड कंट्रोल, एंड देन इट हैज इन्फेक्टेड 2 कंप्यूटर्स एंड देन द कंप्यूटर्स, 2 सर्वर्स, एंड जो भी कंप्यूटर्स उस सर्वर से कनेक्टेड है उन सबको सब में इन्फेक्टेड वायरसेस फैला देगा. So which can steal information or take some data from your system, or can steal your passwords and take money also. So this is one kind of overall model of botnet, how it works overall practically. Practically क्या करता है ये? It is as a raw material, it takes your information. So then goods, they take the information of your accounts, then market, buy and sell, and then generate the wealth, right? तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब बाइंग एंड सेलिंग हो गई आपके कार्ड से एंड ऑल. व्हेन यू कम टू नो तो आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो चुकी है, उसकी वजह से ये सब होता है. सो देन वी आर कमिंग अपॉन दिस टेक्निक्स ऑफ दिस प्रिवेंशन फ्रॉम बॉटनेट. अब इसको कैसे कर सकते हैं बॉटनेट से सिस्टम अपने? काउंटर मेजर्स पब्लिक, यू फायरवॉल इक्विपमेंट्स, की बेसिक चीज है. हर एक साइबर थ्रेट के लिए secure as a security required, right? Then computer measures for home users, then use antivirus, attention while downloading, backup all systems. आपको बैकअप करना है all systems को, attention while downloading, and use internet viruses. वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा. Then you have to counter measure for system administrator. जैसे कि मैंने बताया, वेब सर्वर पे, सर्वर पीसीज पे और इस पे एन कंप्यूटिंग बेस्ड पीसीज पे
ये ज्यादा अटैक करता है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे काउंटर मेजर किया जा सकता है? मॉनिटर लॉग रेगुलरली, मॉनिटर लॉग्स को चेक किया जाना चाहिए रेगुलरली, कौन सी वेबसाइट्स सर्च की गई हैं, सर्व की गई हैं, वहां पे ऑथेंटिक की गई हैं या नहीं. देन यूज नेटवर्क पैकेट स्निफर. So then again you have to purchase a software which is detecting the spyware and all malicious things. Then scan individual machine, and you have to scan with the antivirus your machine, server machine, again and again, so to protect your systems. Then the last cyber threat is denial of service attack. So what is denial of service attack? Is a attack of a network that is designed to bring the network to its knees by flooding the useless traffic. So ये भी इसी तरह काम करता है. They send a lot of flooding useless traffic to you while it is entering into the system. So DOS attack, ये जो attack है, ये overall government services जो भी है, मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज, उनको ज्यादा अटैक करता है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज लाइक आर्मी डेटा और नेवी डेटा. So their overall it is going towards those ways. So and is an explicit attempt to make a computer resource unavailable by injecting a computer virus or flooding the network. Then इसका मॉडल क्या है? इसका denial of service attack का मॉडल है controller, then server PC, then as a zombie it also multiplies the PC. सब जगह पे अपना वायरस जो है, अपना ओवरऑल फाइल ऑफ दोस बॉटनेट इन्फेक्टेड फाइल्स, malicious files इंस्टॉल कर देगा, और it moves very fast, and the people get to know in within 1 hour there hundreds of thousands of PCs have got infected. And throughout that, how it is doing that? By sending the useless traffics. Once the security system is breached, तो वो useless traffic भेज के, adware भेज के, spyware भेज के system corrupt कर देगा. Then इसका कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है एज सच. ये ओवरऑल उन पे ज्यादा काम करता है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए, सिक्योरिटी किसी नेशन की कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए ये लोग इस तरह के वायरसेस का एंड देन दीज ऑफ काइंड ऑफ अटैक्स का यूज करते हैं. देन देयर आर सम प्रिवेंशन दैट कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग द डैमेज. प्रिवेंशन ऑफ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ अटैक, देन प्रिवेंशन फॉर डिफेंडिंग अगेंस्ट द अटैक. सो आपको डिफेंड और प्रिवेंट दोनों करना है. Then let us come upon discussing the cyber laws. ये भी बहुत जरूरी है. It is very very important to know for the youngsters and for the educators today that how even children, अभी जो ये latest Uber के साथ cyber attack हुआ है, ये 18 years old की एक टीम ने किया है. Lapsus they are called as a group, and they are 18-19 in age. So teenagers के साथ ये ज्यादा होता है. They become hackers and they don't know the cyber laws. Cyber laws have a lot of these things. Then governments have made some regulations. So cyber law is law governing cyberspace. Cyberspace including computer, network, software, phone, data storage. सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, साइबर लॉज क्रिएटेड है. सो फर्स्ट साइबर लॉ जो है वो आईटी एक्ट आया था 2000 में, ईयर 2000 में. देन 17th October 2000 it was into force. The primary purpose of the act was to provide legal recognition to electronic commerce and to facilitate filing of electronic records with the government. So Information Technology Act 2000 consisted of 94 sections segregated into 13 chapters. So इसके 13 chapters थे total. उसके major sections जो highlighted sections हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें overall punishment क्या है वो भी आपको overall aware कर देते हैं. So some important cyber laws. Tampering with computer source document without the permission of in charge. अगर आप किसी का डेटा टैम्पर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं, then section 43, right? Tampering means to say making the documents, creating the documents into wrong shape for some purpose intentionally. Then hacking of computer system and data alteration, right? Section 66. Then publishing obscene information. अगर कोई आप wrong information किसी के बारे में publish कर रहे हैं इंटरनेट पे, then section 67. Unauthorized access to protected system, section 70. Then breach of confidentiality and privacy, section 72. Crimes under Indian Penal Code, IPC and special laws offense sections. Now punishments क्या क्या है? So sending, threatening and defamatory messages by email. किसी को भी आप threatening message भेजते हैं या फिर ऐसा email भेजते हैं जिससे कोई भी annoy हो सकता है. So then section is
503 and 499 IPC. Then forgery of electronic records. अगर कोई forgery कर रहा है electronic records की, then section 463 IPC. Then bogus websites and cyber frauds. अगर किसी ने cyber website कोई भी bogus website, fake website बनाई है या cyber fraud किया है, किसी कंपनी की, किसी प्लेटफॉर्म की fake email, fake website create कर दी है, तो IPC 420. Then email spoofing and abuse section 46, 463 and 500 IPC. Email spoofing means to say that sometimes sending mail to make some person, to threaten some person or extort someone. Then webjacking, then hijacking someone's web server. This is section 383 IPC. Online sale of drugs, NDPC, NDPS Act, online sale of arms act. So these two are also there. So now sections, I will be highlighting some sections. Section 43. So in section 43, if any person uses computer network or system network without permission of the owner or any other person who is in charge, अगर किसी का भी PC without permission use किया और उसमें से data information steal करी, तो ये section 43 के under punishment हो सकती है. Introduces computer viruses to any computer. अगर कोई पकड़ा जाता है किसी के PC में intentionally virus डालता हुआ, तो भी punishment हो सकती है. Damaging any computer or network to computer. Then changing account settings, किसी की account settings change करने पे, password change करने पे भी ये धारा लगाई जा सकती है. Then punishment, he or she shall be liable to pay the damages, the way the compensation, and not exceeding to 1 crore to affect the person. Right. Then section 66, hacking with the computer system. Information residing in the computer source must be either destroyed, deleted, altered, diminished in the value or utility. किसी भी information को destroy किया है, delete किया है, altered किया है, affected किया है, then punishment है 3 years of jail or fine up to 2 lakh rupees. So this is 2 lakh rupees of fine or 3 years of imprisonment. Then next section is section 67. In section 67, it is there. Publication or transmission of electronic information and any material contains personalized content, acts or conduct. अगर किसी का भी कोई information publish किया है या transmit किया है from any material, so punishment is first conviction with 2 to 5 years of imprisonment and fine up to 1 lakh rupees. Or second or subsequent conviction with imprisonment of 7 to 10 years also with fine. Then section 65, tamper with the interception and monitoring of any information regarding integrity of security. अगर किसी की भी security breach करने की कोशिश की गई है, तो जैसे मैंने बताया कि government organizations के साथ ऐसा होता है sometimes. So 2 lakh or jail or imprisonment up to 5 years. Then comes your IT Act 2008. In 2008, the IT Act got improvised and amended. और पहले जैसे 2000 IT Act 2000 में आपके 13 chapters थे, तो 14th chapter इसमें introduce किया गया था, right? So it is having 124 sections. So similarly, it is having the section 67 of old Act is amended. Section 66 or 66A or 66F prescribed for punishment of obscene electronic message transmission and cyber terrorism. So इसको update किया गया इन दोनों acts को and amended section 69 also. 69A and B कर दिया है, 2 parts में divide कर दिया. Grant power to state direct blocking for public access of information through any कंप्यूटर रिसोर्स. अगर किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से किसी की इंफॉर्मेशन ब्लॉक या फिर स्टील की गई है और पब्लिकली एक्सेस कर ली गई है, so that the person can also be facing the trouble. So now SOPA and PIPA. SOPA and PIPA are 2 organizations. One is United States have made many rules for regulations. So what is SOPA? SOPA is Stop Online Piracy. So this bill was introduced by United States to expand the ability of fight online trafficking in copyrighted intellectual or property cases. And then PIPA, they also introduced PIPA. So these laws are there to protect us. So this is being followed
as the bill is issued by USA. So as because the cyber crime is highest in USA right now. So PIPA is Protect Intellectual Property Act is proposed of government. So now let me tell you some tips to secure yourself from all the threats, cyber threats, and all those things. So you have to secure yourself from these cyber threats by some ways. You can do that. So the first way I'm sharing is if you don't want that your password information or your surfing information must be can be shared or compromised. So you can use incognito mode into any browser. So majorly the web browsers called Chrome or Firefox are providing this incognito mode. So incognito mode is having its benefits. एक तो incognito mode कोई भी history नहीं रखता आपकी transaction की. So that आपके जैसे password saves हो जाते हैं आपकी websites के ऊपर, ओवरऑल पोर्टल्स के ऊपर. जब आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला, तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर और आपका एक्सपायरी डेट तो रह जाता है उसमें. सो आपका सीवीवी आप सेंटर करना रह जाता है. सो अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आपके अकाउंट से बैलेंस कैन बी डिडक्टेड. अगर आपका सीवीवी किसी ने जज कर लिया, सो उसको उन सब चीजों को वो करने के लिए ओवरकम, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग और सम काइंड ऑफ टास्क करें जो जिसका हिस्ट्री नहीं होना चाहिए और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ना रहे, सो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैन नॉट बी स्टोलन. सो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वैसे तो आपके रिकॉर्ड में रहेगी बट वो स्टील ना हो सके. सो उसमें उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं. योर ब्राउजिंग हिस्ट्री विल नॉट बी शेयर. देन कुकीज एंड साइट डेटा ये शेयर नहीं करता. कुकीज एंड ऑल कैशेज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट बीइंग इम्बाइब्ड इन योर सिस्टम्स. कुकीज एंड पॉपअप्स को ये अवॉइड करता है आपके सिस्टम में आने से. Then block third-party cookies also. You can add this feature when on. Sites can use can't use cookies that track your across web. So आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक ऑप्शन इसमें दिया है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज. तो वो आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज कर देंगे तो आपके पास एडवेयर्स और वो सब पॉपअप ब्लॉक्स नहीं आने बंद हो जाएंगे. जैसे कि आप कई बार एक वेबसाइट ऑन करते हैं तो आपके पास आ जाता है अलाउ कुकीज. सो आप उसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप ये जब स्विच ऑन कर देते हैं आपके पास वो अलाउ एक्सेस के बार बार रिमाइंडर्स नहीं आएंगे वेबसाइट पे. देन यू हैव वेबसाइट टू विजिट एंड यू कैन also have this thing to use to net surf any website. आजकल आपने देखा होगा artificial intelligence is very fast. So आप कोई भी सर्विस जो है उसका यूज करते हैं. इसका एक और बेनिफिट है इनकॉग्निटो का. आप कोई भी वेब सर्विस यूज करते हैं, आप सर्व करते हैं, कोई भी कार देखते हैं आपने पसंद की, कार वाले पे कार देखो पे आपने 2-4 बार सर्व किया, आपने कार के स्पेक्स देखे ओवरऑल, तो आपको मैसेजेस एंड कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे कि आप ये कार लेना चाहें. सो वो सब चीजें और ओवरऑल एआई के थ्रू भी साइबर हैक्स हो रहे हैं. So some kind of companies also steal the information that you are having such a kind of financial power or things, so they can steal other information from data. If you are surfing, about buying a product of just 10 lakh rupees, so those people will be saving your data, keeping your database for those people that these people are having money. They can steal your information from browser. So to protect yourself, you have to use incognito mode. इनकॉग्निटो मोड से आप जब भी नेट सर्व करेंगे आपके पास ऑफर्स नहीं आएंगे क्योंकि इसका कोई हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड होता ही नहीं है. एंड एआई डजंट वर्क ऑन इनकॉग्निटो मोड आल्सो. सो एआई डजंट वर्क तो डेटा आपका सेव नहीं होगा. सो यू विल नॉट बी रिसीविंग दोस कॉल्स एंड लुक्रेटिव ऑफर्स. ये वाला लोन करा लो, वो वाली गाड़ी ले लो. दोस थिंग्स विल नॉट हैपन. सो नेक्स्ट इज we are having this security two-factor authentication. This is also a tip for cyber safety. Two-factor authentication आप लगा सकते हैं, पासवर्ड सिक्योरिटी लगा सकते हैं अपने सिस्टम में. तो टू-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अपने मेल पे कैसे लगाएंगे आप? तो अपनी आप मेल आईडी खोल लीजिए जीमेल की, उसके बाद आप आएंगे सिक्योरिटीज में. जीमेल और याहू दोनों में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है. सो आप कर सकते हैं इसको ऑन टू-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को. इसमें क्या है, वंस यू हैव एंटर्ड इनटू सिक्योरिटी देन इट विल शो यू दिस टू-स्टेप वेरिफिकेशन. तो टू-स्टेप वेरिफिकेशन में जब आप आएंगे यहाँ पे स्विच ऑन करना है आपको. यूज योर फोन टू साइन इन एंड टू-स्टेप वेरिफिकेशन. टू-स्टेप वेरिफिकेशन इज आपका पहले तो पासवर्ड मांगेगा, देन इट विल सेंड टूवर्ड्स योर ऑथेंटिक मोबाइल नंबर जो आपने सेव किया हुआ है, उस पे वो ओटीपी भेजेगा और से यस करके कोड भेजेगा. सो जब वो ओटीपी आया या कोड आया वहां पे आपको प्रेस करना है, तब आपकी ईमेल जो है वो ओपन होगी, मेल आईडी. सो दैट इज टू-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ताकि ईमेल आईडी आपकी कॉम्प्रोमाइज ना हो.
आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। देन आप देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल हम फोन्स यूज करते हैं, वी यूज एप्स एंड वी डाउनलोड एप्स विदाउट नोइंग पीपल एंड विदाउट नोइंग द ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर। समटाइम्स हमें एक सर्विस बहुत अच्छी लगती है, यू नो, अ कैमरा और अ क्यूआर कोड स्कैनर और समथिंग, हम वो जो बहुत जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्ले स्टोर से। बट क्या होता है, समटाइम्स आपने वो ऐप तो इंस्टॉल कर लिया, वो ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो उस केस में आपके साथ क्या होगा, आपने वो ओवरऑल जो है वो ऐप इंस्टॉल कर लिया और उसपे ऐप परमिशंस होती हैं। जब भी आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप ऐप परमिशंस मार्क करते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ, अलाउ कॉन्टैक्ट्स, अलाउ लोकेशन, अलाउ फोन, अलाउ एसएमएस। सो आपके एसएमएस, आपका फोन डेटा, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी लोकेशन, आपका ओवरऑल जो फाइल एंड मीडिया सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ। सो ऑलवेज बी अवेयर कि आप जो भी ऐप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले तो वो ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर हो, either it is bank or either it is the service provider like a cropping software or a video making software, such things we download sometimes. तो आपको वो अवेयर रहना है कि आप ऐप परमिशंस जो है वो अनमार्क कर दें इंस्टॉल करने के बाद, ताकि ऐप आपका इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज ना करे, राइट? So some apps are doing this. एक वेब सीरीज भी आई थी रिसेंटली, दैट इंस्टेंट लोन काइंड ऑफ यू नो लुक्रेटिव ऑफर्स लोगों को दिए गए और ऐप के थ्रू, एंड देन ऐप पर क्या हुआ, दैट इंफॉर्मेशन लोगों की कॉम्प्रोमाइज हुई और लोगों को थ्रेटनिंग कॉल्स आनी शुरू होगी, एंड सम पीपल यू नो कमिटेड सुसाइड आल्सो, उसमें वेब सीरीज में दिखाया हुआ है। सो दैट इज आल्सो हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो आपको क्या करना है, आपको जब भी ऐप इंस्टॉल करना है कोई भी अन यू नो न्यू सोर्स से, और यू कैन से यू हैव डाउनलोडेड अ न्यू ऐप व्हिच यू रिक्वायर, तो आपको ऐप परमिशंस में जाना है, आप ऐप पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, लॉन्ग प्रेस, तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ आता है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, सो आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको आना है यहाँ पे परमिशंस में, परमिशंस पे आपको नॉट अलाउड करना है, जो जो चीज आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते, ये चीजें ना पता लगे, तो आपको फोन, लोकेशन, कैमरास, एसएमएस, कॉन्टेक्ट्स एंड फाइल मीडिया आप अनेबल कर दें। सो डोंट फॉरगेट, आप अपने अपने मोबाइल्स पे चेक करिए आपने कौन कौन सी एप्स इंस्टॉल की हुई हैं और किस किस को परमिशन दी हुई है, किस किस के पास आपके कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं। सो प्लीज चेक दोज थिंग्स टुडे। So it is a good thing to keep your mobile phone also secure, because we have our authentic passwords or CVVs or our card numbers saved on our app sometimes, and we do keep doing shopping and we do not put this permissions off after doing this using the app. So if you have want to keep an app, so you have to you can keep, but always keep these permissions switched off, not allowed, right? So these are some tips from my side, so for using this internet safely. So first of all, I would like to show you that case. That case is beautifully explained by Bloomberg. So I will share the video with you. So just give me a moment. So Bloomberg ने वो केस बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे उबर को हैक किया टीम ऑफ यंगस्टर्स ने, which name of which is Lepsus. So I'm just sharing the video. Just wait a moment. Exactly. This Yet another story that is hard to believe coming out of Uber. What exactly do we know? Okay, so I'm just sharing the video. Okay, is it audible, ma'am? Please check, Tapsi ma'am. Yes, Yet absolutely. another story that is hard to believe coming out of Uber. What exactly
do we know in terms of what happened here? It's so crazy. More than a year ago, Uber heard from these hackers that they had found a way to get information, names, telephone numbers, that sort of information on 50 million riders, and then information on 7 million drivers, and most importantly, driver's license numbers for 600,000 drivers. And the concern here is that that's information that Uber was required to disclose and didn't. And so now, more than a year later, with a new CEO, Dara Khosrowshahi, the company is deciding to come forward and say that they should have disclosed this information, and here's what happened. So Dara Khosrowshahi telling you none of this should have happened. I will not make excuses for it. We are changing the way we do business. Uber has been negotiating with regulators over privacy issues now for a long time. What makes them think that they could get away with this? Yeah, while they were talking to the Federal Trade Commission, and just after negotiations with the New York Attorney General, they faced the question of what to do about this hacking. And it's hard to imagine this engenders any sort of trust with regulators. You already saw in the instance in London where regulators there revoked Uber's license, that part of the issue was they just didn't trust Uber, and that the company hadn't really represented very clearly what had gone on. And this is yet another sign that Uber was willing to go to great lengths to hide information that it now believes it was required to report from regulators. And that's certainly going to give cities, states, and national governments all over the world serious pause. Now, how can we be sure that this information didn't get into anybody else's hands and that the hackers did indeed delete this information? Right. I mean, normally hackers will sometimes wait and sit on information, so that's certainly a concern. I think Uber's belief here is that they did pay the $100,000. They had evidence, perhaps, that the files were actually deleted. We don't know who these hackers were, but they refer to them as, these two individuals. So I think right now there's a belief that that information isn't out there in the public. And of course, Uber is offering, data protection for the drivers affected by the most serious information breach here. So as we have seen in the video, so that girl was saying one thing and asking one thing to the person in the Bloomberg video, that what is the guarantee that after taking the extortion money of $1 lakh, the hackers have not hackers are not still misusing the information, कि उन्होंने वो information delete कर दिया, इसकी क्या guarantee है? So he said there is no guarantee. Once the server is compromised, the data is compromised. So they have just given the word they will not misuse the data. So we have to keep the prevention. Uber की एक mistake कि उन्होंने उनकी जो threatening है, जो धमकी है, overall उन्होंने जो 1 साल पहले दी थी उसको बहुत lightly लिया. So they have to pay the cost, and now their data is compromised. So thank you. This is all from my side. So I welcome the queries. Yeah, I think you can stop sharing the PPT, Rajat. Yeah, sure. Can I have that initial page once again from your side? Sagar, can we have the welcome slide once again? Yes. You have to stop sharing first. Yeah, I have stopped the sharing. Yeah. Just a moment. Right, it's there. Thank you. Yeah, thank you. All right, so that was an extremely informative session, I think, Rajat. Thank you so much. And let me check. Is there any specific reason why you want this slide? We could both be on the screen. Rajat? Yeah, I'll just put it share with our company about it. I will do that. I'll do that because my colleagues are already taking screenshots, not a problem. So yeah. So kindly share the screenshots with yes, me. I will. Sagar, you can stop sharing. Yeah, that's better.
I was checking the question and answers, the chat box, but there seems to be no question, which means that your session was extremely clear and people have no doubts as of now. But still, I would say that if any of the parents, students, or teachers have questions, Rachit, if you could just stop sharing the PPT. It's being shared again. I'm just sharing, taking a screenshot. After that, I'll close it. Thank you. Okay, so since the time is already up and we are running a bit short of time, so I would request all my principals to get in touch with the parents and the teachers and the students, and they can, kind of put forward the queries to us. You can mail it to me and I can mail it to Rachit in turn and he can answer. With this, we come to the end. Sorry. Yeah, please. Definitely, we can ask for the Q&As right now. If anyone have any questions, so I welcome your queries. Yes, you can type it in the chat box, as I have already mentioned at the opening of the session. किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं. We have 5 to 7 minutes, so आप लोग टाइप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं. They don't seem to have many queries. That means it was quite clear. With this, we come to the end of this wonderful session. My earnest thanks to Rachit for giving us this precious time and enlightening us with so many corners. हम लोग को पता नहीं था, बहुत सारी चीजें we got to know. I get a message from somebody who says it was an extremely informative and helpful session. That is so nice of you. I'm really glad. Okay, questions are pouring in. Swati Jaiswal, can I ask a question? Of course you can. Type it in the chat box so that we can pick it up. Yes. Yeah, it is there, ma'am. I'll just take the queries now. So first query which has come up is it important to incorporate a two-level protection? Yes, it is important, because when we are using internet day in, day out, and we are using our mail ID, and sometimes what it happens, that our email ID and password remains saved there. आपने देखा होगा ना, वहां पे आप सेव कर देते हैं ताकि आपको बार बार फिल ना करना पड़े पासवर्ड. सो जब आप वहां पे सेव कर देते हैं, so that information has been compromised, right? So what it can do later on is कि आपका information steal हो सकता है, and then your email ID can also be operated by some unauthentic user. और moreover उस केस में अब अगर आपने two factor authentication लगाया है, so आपसे डबल चेक मांगेगा आपके फोन के ऊपर. there will be an OTP or an access pinpoint, so you have to give access from there. So double protection is always good. Yes. So is hacking and coding the same? See, yes, they are interrelated. So hacker needs to do code to hack something. So अगर वो code नहीं करेंगे तो hack कैसे करेंगे? So as simple as it looks. अगर आप कोड नहीं करेंगे तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते, आप वेब सर्वर नहीं बना सकते, आप पोर्टल नहीं बना सकते, डोमेन नहीं बना सकते. तो जब आप कोड करते हैं तभी आपको कोई डीकोड करने के इंटेंशन से हैक करता है. Swati Jaiswal has a very pertinent question, I think. She says, many a time the location is on. I believe, Swati, you're talking about the phone especially. And, so she says, how can we protect ourselves from that? अगर location हमारा on है, तो पता तो चल ही रहा होगा कि हम कहाँ हैं. Can we save ourselves? Yeah, definitely. Location on करके. Yeah, we can save ourselves. We can be smart in these cases. We have to see that where we are putting the locations on, where not. Right? अगर आप travel कर रहे हैं तो आपका location mode on होना चाहिए, क्योंकि आप Google Map use कर रहे हैं. That is the purpose, to have location mode or location option in your phones. Right? Otherwise, it is I think compromising your privacy. आपका location on है, it goes up to the social media also, Twitter पे, Facebook handle पे, आपके Insta पे.
हर कहीं आपकी लोकेशन आ जाती है that this person is nearby you towards your friends and towards your overall buddies जो भी आपके आईडी में एडेड है, तो वो ऑलरेडी जान जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं. So your location is getting compromised out of that. So use it smartly. जब भी आपको अपना मैप यूज करना है या आपको ओवरऑल लोकेशन ऑन करके ही जो फीचर्स जो एप्स यूज हो सकती हैं तो उसको करें, देन आप उसको स्विच ऑफ कर दें. Absolutely. एंड मोर प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपकी ऐप परमिशंस में आप लोकेशन ऑफ रखें, बिकॉज आप लोकेशन इज नथिंग टू डू विद द ऑपरेशन ऑफ ऑल द एप्स. अदरवाइज थ्रू एप्स आल्सो आपकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है. Okay. We have two people, Rachit, that is, one is Monica Verma and one is Shashwat, who want to know that you should suggest them a book on cyber security. Can we do that? Yeah, I will. I must share rather than a book. I will share the portal. I will share with you the YouTube channel of Bloomberg. So they are sharing a lot of current happening incidents of cyber threats and cyber attacks. Bloomberg is actually a technology-based overall platform. So Bloomberg is only sharing the tech-based news on priority. So there are case studies, there are movies put in by this overall portal Bloomberg. So I will share with you shortly the YouTube channel link. So आप उस पे जाके काफी videos, काफी movies देख सकते हैं जिसमें cyber attacks के बारे में बताया हुआ है, and latest updated news के बारे में भी वो videos डालते रहते हैं, जैसे मैंने एक share किया. Okay. There is a एक और question which question है. says, Hanji, I have antivirus in my PC, we are fully safe or not? Means even then anyone can steal our passwords. Can anyone steal our passwords in spite of having the antivirus on? Yeah, in case I am using a personal PC, ये वाला ही है ना? Even जी. then there is also a need of two-level protection. नहीं, anonymous attendee hai, and down the bottom it says that if you So can even you repeat have the query? Yes, I can. It says that in my PC, I have what it means is it has a antivirus. Can my password be stolen even then? उसके बावजूद क्या Yes, password जा सकता है? Yes. There are other ways also. अगर आपका browser protected नहीं है, so आपका password and आपकी personal informations compromised हो सकती हैं अगर आपका browser protected नहीं है. अगर आप अपने पासवर्ड सेव कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, ट्रांजैक्शन करते हुए, और अदरवाइज फॉर एक्सेसिंग योर मेल, अगर आप पासवर्ड सेव कर रहे हैं, सेव पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आप रिमेंबर पासवर्ड कर रहे हैं, so it can be compromised even after you're having antivirus. Antivirus is one thing which is protecting us from the spywares and malicious softwares which can harm our computer or steal our computer information. And this is the second approach where in the browser, when up to when the browser is not protected, your data can be compromised. This question, Rachit, I would also like to ask, we should accept cookies or not when asked for in some websites. Otherwise, the websites don't open. Until and unless you accept cookies, karo, tab tak to wo on hi nahi hota. How safe are we? And what does it even mean? Cookies means to say we are allowing them to put files on our system, their links and all those things which are required to run that website. Likewise, जैसे एक website है, उस पे videos तभी चलेंगे अगर उनका जो overall system है, software system support करेगा, right? तो उनको वो cookies allow करना जरूरी होता है access करने के लिए. Even reply करने के लिए भी कई बार cookies allow करना जरूरी होता है. But we have to see that हम authentic website पे serve कर रहे हैं या नहीं cookies enable करते हुए. That is very very important. And moreover, अगर आप करना चाहते हैं, you want to explore net, आपको कोई topics explore करना है, you want to explore some product, तो आप incognito tab पे जाइए. It is really very safe. वहाँ पे आपकी cookies भी save नहीं allow नहीं होंगी. Then आपका pop-ups भी blocked होंगे. Then you can do net surf. आपके पास offers भी नहीं आएंगे. Peace, all peace. True. Okay, I have my colleague here, Priyanka, who says how to check the app if it is authorized or not from the Play Store, and how safe are we? Because ladies तो करते ही रहते हैं ये shopping, so we immediately download apps. So we don't even know
what this app is all about और ये कितना नुकसान कर सकता है? Yeah, it is a very very relevant and interesting question. तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐप को ऑथेंटिकेट कैसे करना है. कोई भी फेक ऐप होगी उसका ओवरऑल जो डाउनलोड वॉल्यूम होगा वो 2, 3 या 4 MB तक होगा, हार्डली 5-6 MB तक. तो वो ऑथेंटिक ऐप नहीं है, वो एक ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है. उसने कुछ पेजेस बना के एक ऐप बना दी है आपकी इंफॉर्मेशन लूट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए. तो वो क्या है, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा कि इस पे शॉपिंग करते हैं, आज ये वाला देखते हैं. बट यू हैव टू ऑथेंटिकेट बाय लुकिंग एट द रिव्यूज आल्सो ऑफ द ऐप. आपको रिव्यूज भी देखने हैं, रिव्यूज कैसे हैं ऐप के. देन उसके बाद आपको ये देखना है कि ये सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है या नहीं. ओरिजिनल सॉफ्टवेयर अगर आप मान लो एक्सिस बैंक का, SBI योनो का कोई भी ऑथेंटिक ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो 60 MB और 40 MB से कम नहीं होता, right? So because it is Okay. having the original functions to be installed, right? And it is having multiple options. But जो भी ये fake apps होती हैं, unauthentic apps जो आपके फोन को spam कर सकती हैं, आपकी information steal कर सकती हैं, वो low database पे बनाई होती हैं with 4 or 5 pages. So you have to be smart in that. एक तो reviews check करिए, एक उसका पहले background देखिए आपका. We have a lot of और time. अगर आपको लग रहा है, हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि ऐप इंस्टॉल कर लिया पर ये गलत हो गया, तो ऐप अनइंस्टॉल करने से पहले परमिशंस डिसेबल कर दीजिए. बिकॉज आपने अगर परमिशन इनेबल कर दिया, ऐप अनइंस्टॉल भी कर दिया, आपका डेटा फिर भी पहुंचेगा. Okay. So we are waking up to many new things. Any more questions do we have? You're most welcome to ask. You have your chance. आप पूछ सकते हैं. We have the expert right in front of you. We have one question from Shashwat again. If my mail is hacked, how to bring back my mail? What is the way out? या फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेल अगर हैक हो गया है तो आप पासवर्ड रिट्रीव करिए, फॉरगॉट पासवर्ड करके आपके फोन नंबर से, आपका फोन नंबर या फिर आपकी एक सपोर्टिंग ईमेल आईडी जो एडिट होती है, तो उसके ऊपर वो आपका पासवर्ड भेज देंगे, राइट? सो आपको वहां से लॉग इन करना है. So there will be OTP on your registered mobile number, and then you will be able to retrieve that information. Then you must mail to Gmail authorities that my overall mail server was compromised, my ID, my login was compromised. So please look into this. So they will take the required steps to get it noted and get it noticed कि वो दोबारा ना हो. So वो आपको mail जरूर करना चाहिए Google को whenever it has happened. That's wonderful. ताकि Yes. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रहे. अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है, so you can put that proof that my email ID was hacked, and it is Right. moreover authenticated by Google. Yes, your ID was compromised, so they provide you some certain solutions, जैसे 2-factor authentication वो provide करेंगे आपको. Then आपको बताएंगे कैसे आप. Right. I think that is quite enough. It's 12:20, and okay, one more. This question we'll take up, and this is the last question. The rest of the questions we would like to have on mail. Few shopping, it says. Just let me read it once. Just come in the chat box. Few shopping app asks us to save card details via Visa. Is it a safe option? It is not safe. We must not mention and leave our card information. See, CVV जो होता है वो 3 digits का होता है, right? So up to 999. तो अगर कोई 999 times try करेगा तो हो सकता है उसने 500 तक भी किया है. आपका CVV लग गया तो गया. CVV is only 3 digits letter. 3 digits, code. yes. 3 digits code it is. So it will get compromised. We don't need to save our card details anywhere. If we are saving it, we must have an authentic app on our phone, like Paytm. Paytm is an authentic app, right? Like Flipkart and Amazon, the authentic app. On that, it is safe enough, right? Majorly on Paytm, or we can say on PhonePe and Google Pay, which are authentic service providers, right? Otherwise, also we do not, we should not save the card details.
Absolutely right. And every time we use Amazon, even if our cards are saved, the numbers and the details, they will ask for the CVV. ऐसा नहीं है कि वो CVV भी नहीं पूछेंगे आपसे और directly वो दे देंगे पैसे. ऐसा तो है नहीं. So हाँ, so that is dangerous. Okay. क्या होता है कि हम लोग कुछ टाइम सेव करने के लिए हम कहते हैं कार्ड डिटेल्स डाल के रख दो. So वो कुछ टाइम सेव करने के लिए हमने अपना डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ. That's it. Absolutely. And people like us who's rushing all the time, कि सेव कर लो और दोबारा ना जाना पड़े और दोबारा कार्ड ना निकालना पड़े. But yes, we are aware that it's not a very good practice. So we come to the end of this session. Any more queries, please mail it to your principals and they will send it to me for sure. And I will get you all the answers from Rachit. Big thank you to all our parents, our principals, teachers, my colleagues from the corporate office and our students of all our schools that they have taken out time from this busy schedule. You have been a wonderful audience, I must say. And I think Rachit will also agree. Let us take care. Definitely. And, let us lead cyber safe lives. Let us not, do cyber crimes unknowingly, or maybe fall into the pitfalls also. You all have a lovely weekend. And this is, yes, Rachit, you were saying something? Yeah, ma'am, please share about the Google form. We will share it shortly. Yes, we will share with you a feedback form very shortly through your principals, and you can give your feedback on that. Thank you, Rachit, once again. I feel like thanking you every minute. Whenever you are visible, I feel like thanking you for coming on board. And this session was due for a very long time. So this is Taapsee, your host, signing off. And you all have a fantastic weekend. Thank you so much for being such a patient Thank you. It was a lovely time with you. Thank you all. Okay. Bye-bye. And namaste. Namaste.